मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो हम लोग आगे बढ़े क्या? नेट इनकम अप्रोच पे आए। यस सर। नेट इनकम अप्रोच ऑफ नेट इनकम थ्योरी या नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर। लिखिएगा। तो ये जो हम लोगों का पॉइंट था, जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कि so wait a moment, I'm just coming, hold on. तो ये जो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट इनकम थ्योरी, इस दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये, अच्छा आप में से कोई बताएगा व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम एंड व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम? या मतलब एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ पता है कि ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? एनीबॉडी हु इज नोइंग एज टू व्हाट ऑपरेटिंग इनकम इज? आप में से कोई बताएगा? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर लेकिन कट कर आ रही है आपकी आवाज। ऑपरेटिंग इनकम क्या है बताओ? नहीं पता? बहुत सिंपल है, देखो ऑपरेटिंग। हाँ बताओ रोल नंबर 21 क्या है? सर अर्न जो भी मनी अर्न होगा, इनकम जो अर्न होगा इन द ऑपरेटिंग साइकिल, जस्ट फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। नाउ व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी एक तो ईयर डिसाइड करता है कि वो एक साल के लिए रखेगा या 9 महीना के लिए या फिर 6 महीना के लिए, वो डिसाइड करता है कि वो उनका ऑपरेटिंग साइकिल होता है। सर ऑपरेटिंग इनकम एक तरह से हमारा एक प्रॉफिट है जो कि हमारा रेकरिंग नेचर का होता है, जो कि हमारा डिडक्शन करके जो भी हमारा बचता आता है वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। देखिए ऑपरेटिंग जो वर्ड है वो ऑपरेटिंग वर्ड बहुत कैटेगरिकली यूज किया जाता है
वहां पर जो बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है, जो बिजनेस का कोर एक्टिविटी है, जैसे अगर मैं बात करूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पेट्रोकेमिकल डिवीजन है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो पेट्रोकेमिकल डिवीजन है उसका मेन एक्टिविटी, उसकी कोर एक्टिविटी क्या है? उसकी कोर एक्टिविटी है कि वो पेट्रोकेमिकल बनाए, उसका मार्केटिंग करे, उससे प्रॉफिट अर्न करे। उसी तरीके से उसकी रिफाइनिंग है, ठीक है, उसी तरीके से उसका गैस प्रोडक्शन है। अब उसका एक नया आर्म आ गया जिसमें रिलायंस जियो की बात करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर आ गया उसमें। तो ऑपरेटिंग का मतलब हुआ कि जो बिजनेस का कोर एक्टिविटी है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, जिसको हम लोग उसमें मतलब उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। डू यू हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। यस सर। राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन किया जाए। इसके पहले के क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेट इनकम हम लोग किस तरीके से किसी कंपनी के, किसी बिजनेस के वैल्यू को डिटरमिन करते हैं और वो किस तरीके से कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। हम लोगों ने ये पढ़ा नेट इनकम अप्रोच में कि वो जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है टैक्स से। लेकिन अजम्पशन ये था कि नेट इनकम अप्रोच की जो थ्योरी थी उसमें कोई टैक्स नहीं होगा, नो टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड, जीरो टैक्स। अब क्या कि जितना भी प्रॉफिट हुआ, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सारा का सारा प्रॉफिट, अगर आपके पास डेट जीरो है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास चला गया। As you go on increasing the debt component in the capital structure, मैं क्या कह रहा हूं, as you go on increasing the debt component in the capital structure, you would find two things happening simultaneously. One is, with every subsequent increase in the debt component of the capital structure, the value of the company is going to increase. And on the other hand, the weighted average cost of capital is coming down. The weighted average capital, cost of capital of the business is falling. Why is it happening? Because as the debt component increases, the interest payable on debt is what? Is a permissible expense, and it is shown at the debit side of profit and loss account. What this does, it does that it reduces the profit of the business, and as a result of reduction in the profit of the business, the net tax liability of the business comes down, isn't it? So ultimately, your average cost of capital is falling. This is what net income approach was. Am I clear, class? Yes sir. Yes sir. ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? अब हम लोगों को पढ़ना है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच या थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक हेडिंग दे दीजिएगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। This approach to capital structure, was given by David Durand, David D-A-V-I-D, David Durand, D-U-R-A-N-D, David Durand. Full stop. His theory is based on certain assumptions.
His theory is based on certain assumptions. हाइफन दे दीजिए, पहला लिखिएगा the overall capitalization rate ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the overall capitalization rate of the firm, the overall capitalization rate of the firm ब्रैकेट में KW मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपके बिजनेस पे जितना भी कैपिटल इन्फ्यूज किया गया, सभी कैपिटल के इन्फ्यूजन का कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, और वो सारा कॉस्ट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एक बार जो आपने कैलकुलेट कर लिया वो आपको मानना पड़ेगा कि कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है, यानी कि KW वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्री ऑफ लिवरेजेस, फॉर ऑल डिग्री ऑफ लिवरेजेस। अब देखिए, अगर आपको फर्क समझ में आया होगा, इसी पॉइंट में बहुत मूल चीजें हैं, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। हम लोगों ने जो नेट इनकम अप्रोच पढ़ा, उसमें मैंने अभी भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि जैसे जैसे लिवरेज का पोजीशन चेंज करेगा, जैसे जैसे डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज करता जाएगा, वैसे वैसे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KW है वो भी चेंज करेगा, राइट? लेकिन ये जो Yes, नेट sir. ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इसमें ये कहा गया कि नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा, डेट बढ़े घटे, डेट और इक्विटी का जो भी कंपोनेंट होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिवरेज से फर्म के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कोई असर होने वाला नहीं है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। पॉइंट नंबर 2, net operating income is capitalized at an overall capitalization rate in order to have the total market value of the firm, in order to have the total market value of the firm, in order to have, in order to have the total market value of the firm, full stop। नीचे लिखिएगा स्टार मार्क देके, the value of the firm V, the value of the firm V को कैपिटल में, रोल नंबर 15। Yes, sir. The value of the firm ब्रैकेट में V is ascertained at overall cost of capital, at overall cost of capital, that is KW। Sir, if ascertaining is ascertained at overall cost of capital, is ascertained at overall cost of capital, ब्रैकेट में KW। अब नीचे लिखिएगा V is equal to
V is equal to EBIT by KW. EBIT by KW. EBIT matlab earning before interest and tax divided by KW, weighted average cost of capital. Point number 3. The market value of the debt is subtracted from the total market value comma, in order to get the market value of equity. Next assumption लिखिएगा. As the cost of debt is constant, comma, the cost of equity will be नीचे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, KE is equal to EBIT minus 1 by S. EBIT minus 1 by S. EBIT minus 1 by S. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. सर यहाँ एस क्या होगा? सब बताते हैं. एस का मतलब इक्विटी होगा. सब बता रहे हैं, पहले लिख लो एक बार. Under net operating income approach, comma, the most significant assumption is that the weighted average cost of capital is constant irrespective of the degree of leverage
irrespective of the degree of leverage, full stop. सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद The segregation of roll number 18 क्या बोलो? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद Cost of capital, weighted average cost of capital is constant. Weighted average cost of capital is constant irrespective of the degree of leverage. Irrespective of the degree of leverage, full stop. The segregation of, segregation का मतलब अलग करना. The segregation of debt and equity, the segregation of debt and equity is not important here. And the market capitalizes the value, and the market capitalizes the value of the firm as a whole. Value of the firm as a whole, full stop. Again, paragraph change. Thus, comma, an increase in the use of cheaper debt is offset exactly, is offset, O-double-F, offset का मतलब उसको neutralize कर दे, is offset exactly by the corresponding increase, exactly by the corresponding increase in the equity capitalization rate, in the equity capitalization rate, full stop. Therefore, the weighted average cost of capital and cost of debt remain unchanged, and cost of debt remain unchanged for all levels of leverage, remain unchanged for all levels of leverage, full stop. Sir, for all levels of leverage. If a firm goes on increasing its debt, comma, the business proposition becomes
risky, the business proposition becomes risky, and the investors will have to make a sacrifice. And the investors will have to make a sacrifice with a low price to earning ratio, PE ratio, full stop. तो पढ़ के देखो एक बार फटाफट, जल्दी करो, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। Complete.
कुछ समझ में आया क्या क्लास? हेलो क्लास, कुछ समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में डिफरेंस शायद समझ में आ गया होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसको मैंने बाद में भी लिखवाया, कि भाई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का जो पहला अजम्पशन है, जो कहता है कि द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये अजम्पशन है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात कि डेट का भी कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। डेट का भी कॉस्ट क्या है? The cost of debt is also constant. It is also not changing. Cost of debt is also constant. तो जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस प्रोपोजिशन में, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के कंपोनेंट को बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे डेट का जो कॉस्ट होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट ऑफ। वाला जो अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या था कि हम लोग वैल्यू ऑफ बिजनेस को निकालते थे कैसे, कि डेट का उसके कॉस्ट के हिसाब से, हम लोग उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो उसको पेमेंट करते थे, वहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालते थे, और फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते थे, और दोनों को ऐड करके हम लोग टोटल का वैल्यू निकालते थे। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। यहां पर क्या करना है बाबू? यहां पर ये नहीं है। यहां पर कह रहा है कि मतलब टोटल जो ईबीआईटी है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है, उसको हम लोग एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पे कैपिटलाइज कर देंगे, और ओवरऑल बिजनेस का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ईबीआईटी, और उसको हम लोग जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि कांस्टेंट है, उससे कैपिटलाइज करके वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। अब अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? उस जो एक मतलब एक जनरलाइज्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जो आपने निकाला, उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट को जब आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकल जाएगा। अब जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान ये देना है कि इस अप्रोच में चूंकि हमने कांस्टेंट माना है इसको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के कंपोनेंट को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे रिस्क प्रोपोजिशन क्या होता जाएगा? रिस्क प्रोपोजिशन बढ़ता चला जाएगा। तो जब रिस्क प्रोपोजिशन बढ़ेगा तो क्या होगा? रिस्क प्रोपोजिशन बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो शेयर, हाँ, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है उसको पीई रेशियो कम मिलता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट कम देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क एसोसिएटेड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का हिस्सा ज्यादा होने की वजह से, रिस्क ज्यादा होने की वजह से, इंटरेस्ट लायबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसके पास जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा सा नुकसान है, बाकी और कोई इशू इसमें मतलब नहीं है। तो इसका जो इलस्ट्रेशन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा जो और दो थियोरी बची हुई है, अभी जो आपने पढ़ा या कल के क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा, उसमें कुछ डाउट्स अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट। नो डाउट? नो सर। नो सर। सर लेवरेज क्या होता है, फिर से बता दीजिएगा। क्या? सर लेवरेज। लिवरेज क्या होता है? लिवरेज जो है वो दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। लिवरेज ये बताने की कोशिश करता है कि आपके पास जो फिक्स्ड एसेट है, जो फिक्स्ड रिसोर्सेज है, या जो फिक्स्ड चार्ज वाला जितना भी सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप किस तरीके से अपने बिजनेस में बेहतर तरीके से यूज कर पाए, इसी को कहते हैं लिवरेज।
यस सर, समझ गया। ठीक है, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग एंड कर रहा हूँ। अटेंडेंस के लिए सारे लोग वेट करेंगे।